So let's see. So there are 120 questions in 2 hours, which अभी मैं बता चुकी हूँ मैं आपको. Now this is the overview of 2018 का paper. Okay, 2018 paper is apart from what I have shown you earlier. यहाँ पे आपको दिखा है कि history में से questions कम आए हैं. So maybe आप बहुत history पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, if you have good knowledge on history, आपका शायद ये क्रैक हो सकता है. तो yellow parts आप highlight देखो. It's basically urban planning development theory जो important है, urban ecology and green ratings, state central government के acts, those are important. Building construction materials, ये हमने देखा गया है कि ज्यादा आते हैं इससे क्वेश्चन. So इसको भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो. If you're a planner, तब भी आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर otherwise you'll miss out on a lot of questions. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना. Maybe you can just attempt the previous year questions. ठीक है, आपको बहुत नहीं करना. Previous year questions देखो, उसमें से भी काफी बार आ जाते हैं questions. ठीक है, तो previous year means GATE के पेपर भी देख सकते हो, और you can see इसके RPSC के पेपर्स, और अगर आपके पास और कोई गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर है तो उसमें आप स्पेसिफिकली इस एरिया से क्वेश्चंस देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस सिमिलर आते हैं. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. हिस्ट्री. नाउ हिस्ट्री हैड ओनली 2 क्वेश्चन. देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या थे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम, ये हमारा क्वेश्चन आया था अलहम्ब्रा के बारे में. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज क्लासिफाइड एज एन एग्जांपल ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको गेस, अब आपको आता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट डायरेक्टली. इसका आंसर हमारा मोरिश आर्किटेक्चर है. ठीक है, अगर आपको आता है तो यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट. अलहम्ब्रा से आपको ये पता चलता है कि इट इज आप कह सकते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट हो सकता है, मतलब इस्लामिक जगह से बिलोंग कर सकता है, या फिर ऐसा आपको कुछ आइडिया हो सकता है. ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस. एंड बट यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी थोड़े से ऐसे कंफ्यूजिंग दिए हैं, सो इट माइट बी कंफ्यूजिंग, बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तब इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज यू कैन सी. ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन अपने एंड से लेना है, वेदर यू फील कि हम आपको ये आइडिया है कि नहीं है. मोरिश आर्किटेक्चर में अलहम्ब्रा है. ठीक है, अलहम्ब्रा का वील शो यू सम पिक्चर्स की ये कैसा है. ठीक है, दिस इज अलहम्ब्रा एंड जो भी मैंने आपको बताया, एंड दिस इज पार्ट ऑफ मोरिश आर्किटेक्चर. अगर आपको याद होता है तो ये 2014 के गेट में भी ये क्वेश्चन एज इट इज आया था. तो गेट के पेपर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गेट के पेपर्स भी एक बार आप देख सकते हो. ओके, सो गेट पेपर्स आई थिंक इट्स विद एवरीवन, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट शेयर्ड एज इट. ठीक है, सबके पास ये पेपर होगा. यू कैन जस्ट गो थ्रू, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लो और ऊपर से सारे रीड कर लो, तो आपका ये इट मे हेल्प यू. कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली 3, 4, 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने के चांसेस हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री. दिस इज इजी क्वेश्चन. आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा इसका. लेट मी जस्ट क्लियर इट. Which is the first residential international university that had a long illustrious life, lasted for 800 years, founded in 5th century AD. So I am sure कि इसका आइडिया आपको होगा कि इट्स द नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये तो हमारे हिस्ट्री में बहुत ही प्रोमिनेंटली बताया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट हुआ किसी को. बट इन केस यू नो इफ यू आर नॉट श्योर, ओके, डोंट अटेम्प्ट इतने, मतलब यू डोंट हैव टू मेक अ गेस. रैंडम गेस कभी नहीं करना है. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट. ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, एंड इट वाज इन बिहार. इट्स मॉडर्न बिहार का पार्ट है वो. ठीक है, तो आप इसके बारे में Nalanda University, I don't think it needs much explanation. ठीक है, मगर Pali was the main language of instruction. ठीक है, so we will not focus more on these things, but अगर राजस्थान specific details हैं कहीं पे, तो you should always read it in detail. But यहाँ पे आप थोड़ा बहुत gate papers refer कर लोगे, तो I think you would be able to solve most history questions. ठीक है, अब हम आते हैं urban planning and development theories पे. ठीक है, ये this had 16 questions. Of course urban planning का ही हमारा पेपर है, तो it will be there. और इसमें कुछ सिटी कंसेप्ट्स और मॉडल्स हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं इवन इन गेट पेपर और अदरवाइज. ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में. ओके, सो दिस इज अ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली भी सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा. टू अवॉइड द टॉक्सिक एंड अनडिजायरेबल स्मेल्स एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल जोन, on which part of the city industries shall be provided. ठीक है, अगर आपका सिटी है यहाँ पे, if you see a city here, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन अगर ये है, मान लो विंड की डायरेक्शन ये है, सो नॉर्मली
सर्दर्न साइड या नॉर्दर्न साइड से आप कुछ बता नहीं सकते. देयर इज नथिंग टू बी इन्फर्ड फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है, नॉर्दर्न साइड में होगा, सर्दर्न साइड में होगा, इट डजंट मेक सेंस अंटिल यू नो द विंड डायरेक्शन. ठीक है, तो इसलिए हमें विंड से मतलब है. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लीवर्ड या विंडवर्ड. विंडवर्ड इज द साइड. अगर यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री जैसे अभी दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से स्मोक जाता है तो वो सिटी में जाएगा. ये विंडवर्ड साइड होती है जहां से विंड आ रहा है. ओके, द अदर साइड इज द लीवर्ड साइड. तो अगर आपकी इंडस्ट्री यहाँ है तो इट्स गुड नो कि यहाँ से आपकी जो भी एमिशंस होंगी वो सिटी के बाहर जाएंगी. ओके, सो यू कैन सी द इलस्ट्रेशंस डाउन. आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि द आंसर इज नॉट विंडवर्ड, इट इज लीवर्ड. ठीक है, आई थिंक दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू नाउ. ठीक है, तो अब लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You will also be getting some details on in the जब हम आपको शेयर करेंगे notes for solved examples, तब आपको उसमें भी आप you can refer. Okay, this is also coming from previous year GATE paper. Broadacre city was an urban development concept. आपने बहुत सुना होगा ये. It's a very common question. Previous GATE paper में भी आया हुआ है. Answer क्या है? Frank Lloyd Wright, FL Wright का. ठीक है, अदर पर्सन आपको पता है इनका इसका कंसेप्ट अलग है. नेबरहुड कंसेप्ट एरिस्पेरी का अलग है. पैट्रिक एडिस is also not there. तो आपको FL Wright is very आपको आना चाहिए क्वेश्चन. If you're not sure again, आपको then you have to make your decision कि क्या करना है. Not in the first attempt if it is not very clear to you. In the second attempt, if you are only confused between two of them. Okay, let's move to next. City can be cited as an example of radiocentric urban form. Okay, so I think इसमें आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं. यू नो कि अगर आपको पता है कि मुंबई इज लीनियर. ठीक है, यू नो वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर भी आंसर नहीं है. ओके, चंडीगढ़ इज ग्रिड आयरन एंड न्यू दिल्ली आपको पता है कि इट्स हैज रिंग रोड्स, तो ये सेंट्रिक फॉर्म में है. और तो यू कैन डायरेक्टली गेस कि न्यू दिल्ली इज द आंसर. ये आपको आता होगा इफ यू आर अ प्लानर. ठीक है, आपको मोस्टली यू वुड बी हैविंग सम आइडिया कि सिटी फॉर्म्स कैसे होती हैं. ठीक है, एंड ऑप्शंस बहुत ही इजी थे इस वाले क्वेश्चन के केस में. तो इट्स वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल कि न्यू दिल्ली इज द आंसर. ठीक है, ग्रिड आयरन है और नवी मुंबई का लीनियर है. एंड वी कैन ऑल्सो सी सम मोर ऑफ दीज आंसर्स. एक मिनट, आई शो यू. ओके, सो सिटी फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो इवन इंटरनेशनली अगर आपको देखना है तो इट्स लाइक स्टार शेप सिटी है वॉशिंगटन, मॉस्को. लीनियर सिटी में मुंबई आता है, कोलकाता आता है, लेनिनग्राड एंड स्टालिनग्राड. रिंग फॉर्म सैन फ्रांसिस्को, शीट फॉर्म टोक्यो. पॉलीसेंटर्ड में हम डिट्रॉइट का एग्जांपल लेते हैं. फिंगर प्लान इज कोपेनहेगन एंड रेडियो सेंट्रिक इज न्यू दिल्ली. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस. ओके, फिंगर प्लान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ से आपको अगर देखना है तो ये फिंगर फॉर्म और लीनियर पता होना चाहिए. Also, who gave this concept? ये भी एक important question आता है. ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लेना. ठीक है, सूर्या माता है, वो आप लोग एक प्लानर्स वाला भी एक लिस्ट देख सकते हो, रेफर कर सकते हो इसके लिए. The radiocentric city. Okay, so advantages. You can just read through it. This all is going to be provided to you. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास radiocentric में inner ring roads, which you can know. If you know the features of a radiocentricity, you can easily tell कि ये Delhi है. Okay, Washington DC is also an example. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Okay, this is a master plan anyway. So here you can see ये रिंग रोड्स हैं, बट अभी आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, बट यू नो क्या रिंग रोड है. One thing I would like to add, you see there are certain centers in Delhi like Connaught Place. This area is the center of India. So whole of the Delhi has been evolved around these centers. Yes. ठीक. Okay. So let's move on to the next question. I'm thinking ये आपको clear हो गया होगा काफी. Next question is the area around city that supplies. Okay, this question. इसमें आपको कितना आइडिया होगा इस पे डिपेंड करता है. नॉर्मली यू नो इवन इफ आई हैव टू अटेम्प्ट दिस, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस में काफी यू सी these three options are quite similar, and if you don't know कि ये क्या है then it's very difficult attempt. Okay, it's not an easy attempt.
पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि यू नो बेसिकली रिम लैंड एंड अर्बन लैंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दीज आर बोथ on the outskirts of the city. Urban fringe भी होता है, लेकिन urban fringe is not, you don't, you know कि ये supply resource ऐसा कुछ नहीं है उसकी definition में. Okay, so manpower को city को provide करता है. This is not the thing. This urban fringe में हम fringe area में ज़्यादा कुछ development वैसी नहीं होती है, और you can say कि manpower वहाँ supply नहीं होता. तो urban fringe is not a, you know, you can just eliminate this. Lena land, land, rim land में अगर आपको confusion है, you may skip this, but otherwise अगर आपको इन दोनों में doubt है, you can take an attempt. ठीक है, रिम लैंड और ये दोनों आउटस्कर्ट्स में होते हैं, बट अमलैंड इज द एरिया दैट सप्लाइज रिसोर्सेज. ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मैन पावर. ठीक है, दिस इज देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this question is relatively easy if you just try to read the question properly. The phenomenon related to reduced and with reduced interaction between city neighboring settlements due to increases with an increased distance. Okay, I think the question has got flipped a little. ठीक है, increased distance के साथ interaction reduce होता है city के neighboring settlements में. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कीवर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. टाइम डीके इज नॉट, डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन. इंटर रिलेशनशिप डीके डजंट रियली साउंड की इसमें कोई, आई मीन डजंट मेक सेंस. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कुछ हमें क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है, इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. इंटरेक्शन रिड्यूस थ्रू डिस्टेंस, सो वी हैव टू से डिपेंडेंसी डीके इज आल्सो नॉट अ टर्म एक्चुअली. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, मोस्ट logically correct answer is distance decay. Okay, तो distance decay में क्या होता है कि जैसे जैसे distance बढ़ता है, if you know gravity model पे काम करता है ये. ठीक है, तो आपको पता है gravity का भी होता है inversely proportional to r square, right? जितना distance ज्यादा होगा वहाँ ज्यादा force होता है. वैसे ही this distance also works in the same way. Distance model का भी यही कहना है कि interaction I is inversely proportional to the distance का square between the two settlements. Okay, so this works. This is the distance decay. Let's just go to the next question. If you have understood कि distance decay को हम कैसे करते हैं. Okay, so if there is increased distance, interaction reduces. Now this question again is also very intuitive. अगर आप question को ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा. And the word, try to understand the word counter magnet. ठीक है, a counter magnet is used to protect the main city from flow of new immigrants and restricting physical expansion. तो मतलब आपको सिटी को रोकना है अर्बन स्प्रॉल होने से. ठीक है, अब बढ़ाना, फिर जितने जितने लोग आएंगे, माइग्रेंट्स बढ़ेंगी तो वो सिटी बड़ा होगा. वी डोंट वांट दैट एक्सपेंशन टू हैपन. तो क्या रोक सकता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड काउंटर मैग्नेट से आपको ये समझ आ रहा है कि इट्स नॉट मैग्नेट है, बट वी वांट टू स्टॉप the city to attract this, and there should be some counter magnet which should oppose this movement of immigrants from different places to inside the city. उसको रोकने के लिए हमें क्या हम लगा सकते हैं? सिटी कोर इज नॉट एन ऑप्शन. ठीक है, सिटी कोर तो मैग्नेट है. दिस इज द मैग्नेट, राइट? सिटी कोर में ही लोग अट्रैक्ट होके जाते हैं, ऑल वर्कर्स, माइग्रेंट्स. तो ये आप इसको तो आप एलिमिनेट कर दो. अर्बन फ्रेंच कैसे रोकेगा? देयर इज नो, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या रोक सकता है. अर्बन फ्रेंच है, मेन रेजिडेंशियल जोन्स of the city. How can these prevent people from going inside? There is no sense in here. So most logically correct thing is the distance of 50 kilometer or more from the city outskirts. Okay, तो counter magnet जो है आपका, अगर city के बाहर होगा, city यहाँ है, city के बाहर अगर आपका कोई counter magnet है जहाँ पे लोग जाते हैं for employment and other things, and they have a better source here, तो वो लोग city में आने से पहले city में नहीं आएंगे. It will act as a counter magnet, preventing the people from going into the city. ठीक है, if it has the required facilities, services, सब कुछ अगर आपको इस counter magnet में मिल रहा है तो people will not go into the city. I would also like to yes, I would also like to tell you like what you understand from the term core. From the term magnet. Magnet is something which attracts. Okay, so what in a city attracts? The core of the city. Say Connaught Place in Delhi is the center of the city. It attracts population and immigration towards the city. Core is where the services is available, where people migrate for the resources or livelihood.
Okay, so if we think of a term counter magnet, which is completely opposite to magnet, what we'll say? First of all, we say let's go away from the core, then we'll go towards the outskirt. Okay, we'll go towards the outskirts. Outskirts term only in the option 4. Okay, then it is saying distance more 50 kilometer or more from the city outskirts. So this terms completely resonance with the term counter magnet. Okay. Normally urban fringe में आपके पास इतनी facilities और सब नहीं होती हैं. If you just know about urban fringe areas, वहाँ पे आपके वो काउंटर मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप बाहर में जाके लोग माइग्रेट हो रहे हैं. Again, that will increase. Anyways, it will increase the help in the physical expansion of the city. तो वो भी आप एक तरह से सोच सकते हो. I mean, it depends on how you want to understand this, but this word is the key element. ठीक है, counter magnet से ही आपको समझ आएगा कि what you are trying to say. Okay, what it should avoid. ठीक है, ऐसा कौन सा लोकेशन है जो अवॉइड कर सकता है for immigrants going into the city. ठीक है, so next, let's go to the next question. Okay, so again this is from a planning concept. ये बहुत ही common question है. Again in GATE ये बहुत बार आता है. Or any of the other theories like the crystal base theory or the concentric zone model, ये सब चीजें आती रहती हैं. So you should be knowing this. ठीक है, ये sector theory जो है जिसमें the zone is divided in different sectors. CBD है center में, and then you have different sectors. सबसे ज़्यादा high class is the least, middle class is थोड़ा ज़्यादा होता है, and then you have factories, and then बीच में you have low class people basically for these factories. ठीक है, यहाँ से लोग workers जाएंगे factories में. So this is given by Kumar Hoyt, okay, H Hoyt, and this is a very common question that appears. और इसके रिलेशन में आप बाकी सारे भी जो इतने theories जो commonly होते हैं urban planning में, you should go through it once because the questions can come from there. Okay, let's go to the next question then. Okay, now this question, so I believe everyone would be aware of 74 Constitutional Amendment Act, 73rd and 74th का आपको difference ही पता होगा. तो यहाँ से भी हम कुछ code ले सकते हैं, but the question is the umbrella organization of UMTA is proposed. ठीक है, अगर ये 74th के अंदर अगर propose हुआ है, तो you should understand कि this is for 74th Amendment Act was for urban areas, right? And 73rd was for the village, at the village level, 3-tier system बनाया था. So when you are saying 74th Amendment Act, so it UMTA should be for an urban area. तो urban area तो होगा ही. Now again there is a, यहाँ पे हम वो exam strategy या trick जो बोल लो आप इसको, we use this कि आपको जितनी भी बार same words repeated दिखते हैं, chances are कि this word is fixed. ठीक है, unique नहीं होगा. ठीक है, this is something which we follow while we solve the questions. अगर आपको नहीं आता, ठीक है, आता है तो well and good, you can just go ahead and take कि ये answer है. But otherwise you have unified coming thrice, you know it's unified. Travel agency, travel area, travel word हम normally किसी भी organization के लिए use नहीं करते हैं. ठीक है, it should be transport authority या कुछ ऐसा. तो आप ये भी चीज देख सकते हो, and it's an urban area metropolitan transport authority. ठीक है, तो आप ऐसे इसको बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू कैन टेल कि इसका फुल फॉर्म ये होता है यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी. थोड़ा अगर आपको आइडिया है कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है एंड इट्स एन अथॉरिटी, ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अथॉरिटी वर्ड ज्यादातर हमारे इंडिया में यूज होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी गवर्नमेंटल बॉडी. ओके, सो UMTA. Okay, now next, let's go to the next question. Okay, this question, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये है कि आप, if you have heard it, then a second. Okay, if you know the answer, then it is good. Otherwise, Jane Jacob को normally हम लोग relate करते हैं इस book से, The Death and Life of Great American Cities, but she actually she's an urbanist and activist, but she's not a formal planner. तो आप एक तरह से देख सकते हो कि this is a general thing, a general idea था जो उसका, which is
I'm not saying कि इससे आपको idea लगेगा, but if you have any idea कि ये इस defensible space theory तो नहीं है, because it's done by someone else. Broken windows theory, I don't know if there's a theory like this, but आपको most ये जो eyes on the street is the concept जो उसने दिया था, so that streets are more safe. If there are more activities happening on the streets, the streets will be automatically becoming more safe, and it will be a good place, you know, for recreation. तो ये formal planner नहीं है, तो she didn't give a theory really, but eyes on the street was a concept that she gave कि हाँ जितनी एक्टिविटी होगी उतना वहाँ पे you know recreation हो सकता है and social cohesion हो सकता है. ठीक है, then now let's move to the next one. Okay, so this is again a question from GATE. Okay, so cohort का जो meaning है ये भी GATE का पेपर में आया हुआ है. Cohort generally refers to a segment of the population. Okay, a segment of the population. तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना भी अगर आपको इंग्लिश का वर्ड कोहॉर्ट का जनरल मीनिंग भी पता है तो आप इसमें से यहाँ से बता सकते हो कि which one of these can in urban planning be a way of analyzing a segment of the population. It's the 8-sex classification. ठीक है, तो 8-sex classification से हमें काफी आइडिया लग जाता है about the population कैसे divided है, female कितने हैं, age wise कितना क्या segregation है. ठीक है, all the other options are not really anything to do with population. Contour level or land use classification analysis, land use classification or contour level analysis, soil layer classification, इनका कोई relation नहीं है. These are all nature related, natural land related चीजें हैं, topography बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है, the land use classification is done in the master plan. आपको थोड़ा आइडिया है तो you can just get it from the word in. Okay, so अगर आपको cohort का meaning पता है तो then you can solve this answer, get this answer. Okay, now let's, I think that's it. Would you like to add something, Marisa, here? It's fine. You have almost added everything. People have to focus on the term cohort. Cohort, if it is related to population. Other terms are simply soil layer classification is related to ecosystem or ecology. Land use classification is mentioned whether it is green, public, semi-public, institutional, and master plan. So if any person is working and they have referred to a master plan, they have known where the land use has been provided. Contours is given in topography to analyze the different levels in a hilly area. Okay, so from this option, if you do the odd one out too, the C option is the odd one out. Okay. So you can take multiple approaches, right? You can use another approach also sometimes. If you know, if you have good logical thinking skill, then also you will be able to solve a lot of these questions. ठीक है, तो आपको अगर आपको थोड़ा सा strategically logic लगाना आता है थोड़ा बहुत, you can try it on these questions. Sometimes you will be able to crack them. ठीक है, तो let's move on to the next. I think Marisa has covered everything regarding this question. Let's move on to the next one. Okay, let me clear the screen once. Okay, town plan for motor age. Okay, I think this question should be known by a lot of you. Town for the motor age is the Radburn in New Jersey. Okay, it's also a GATE question. That is a repeated question. Yeah, it's a repeated question, so that it keeps on coming. You will see this question a lot. In MCQs, you will see it appearing multiple times, okay? Because MCQs, we see a lot of these kind of questions, okay? So where you have different towns, and you have to tell which is usually the description used for it. Okay, so this is all about it. It was inspired directly by Letchworth and Welwyn. I hope that you guys know that Letchworth and Welwyn, about Letchworth and Welwyn. These can also come up as a question. Okay, so garden cities, and you should also study about garden cities. Garden cities is also one important concept you can cover while preparing. Now let's move to the next question. Okay, now this is a question which is a little tricky. But if you know the answer, well and good. But if you don't know the answer, we can, I mean, this is not a question to be, if you don't know the answer, this is definitely not the answer you should give in the first attempt. If you are still at 60 or 65 only questions, then you might try this question out. The normal logic you use, you normally try to eliminate either the first and fourth option. Normally first and fourth, you will see such kind of questions will mostly have their answers in B or C. Okay, and this will be seen in this paper as well. You will, while we are doing this paper,
आगे भी आपको दिखेगा कि बी और सी में से काफी बार आंसर आ जाता है, बट इट्स नॉट लाइक हमेशा आता है, बट बी और सी में से आने के चांसेस दे आर वेरी गुड. I would like to add to you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि whenever you attempt any question ना, the apart from knowing exactly the right answer, everything is a probability of getting it correct. Okay, so the higher you know, higher you eliminate the other options. Suppose there are four options, you eliminate the two options, the chances of getting it correct is around 50%. 50%. Okay, so apart from knowing the exact right answer, everything is just a probability. We can Right. attempt it taking this. Okay, but this is not the sure shot way. But if you attempt very less number of question even in the round 3, your number of attempts is very low, then you can go for this. Then this strategy, I call it as middle two. Usually in the numerical types of options is there. Usually one of the middle two options are correct. Okay. Usually in most of the circumstances. And the middle two works in two ways. I'll add to this strategy. So normally, which Manish sir will also agree to this, that we see that either it is the middle two option in the order that they have given the answers, or the middle two options in the limits. If you see, this is the lowest range, this is the highest range. So we normally see that the lowest range is just to give you a confusing answer, and the highest range is given to you, but the answer normally lies somewhere in between, in the middle range. True. Okay, so middle range and middle options, we can take this as one way of dealing with questions if you haven't given much attempts, or I mean, if you haven't solved much questions in the first attempt, in the first round of going through the paper. Okay, so this is okay. Let's go to the next one. So answer. Okay, sorry, I just forgot to give the answer. The answer here is 40 to 50,000. Okay, so this is the answer we have. Oh, sorry, I'm so sorry. I just got carried away a bit. Okay, 30,000 to 40,000 is the answer. Sorry, 30,000 to 40,000 is the answer here. So see, you may be a little confused within these two, and it's not the right thing to do to make a random guess when you don't know the answer. If you know the answer, you can, or if you're just confused whether, you know, and if you're not given much attempt, like solved much questions, then you can try this out. You can just give an attempt here. Okay, anyway, next. Okay, so Letchworth Garden City was to sustain a population between 35,000 people. Okay, so this may be indirectly asked to you, what was Letchworth's population? Okay, so how much was it planned for? So you may get this question twisted a bit, but these Garden City questions is something which comes a lot of times in even GATE and any other government exam paper. Okay, let's move on to the next one. Okay, acoustics. I think most of us already know that acoustics is given by CA Doxiadis. Okay, and this is also a GATE repeated question, which has come. You will see this in a lot of papers. This was also in GATE one of the years. I'm not remembering which year exactly. Okay, so this question answer is CA Doxiadis. If you look at the other options, this I think everyone can easily eliminate. Now, if someone doesn't know, then it is a difficult choice. But otherwise, yeah, you have to make your decision here. There is no way out. Otherwise, if you don't know this, but you should at least try to remember this term and this person. Okay, I think everyone who has done planning and has heard about acoustics would remember this name. Okay, acoustics is basically the study of settlements. Okay, so that's community and settlements. Let's just go to the next question now.